Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Aastha Dhami. Realized it's been really long since I sat down and made a normal video where I'm just talking like to the camera, just me. I do blame my work and my life, which is going crazy right now, and that's why I wanted to give you an update, like what all things are, coming between me and YouTube and posting regularly. So we'll start with the normal question, how am I doing? I am doing really well. Like ever since I moved to Gurgaon, things have been better. I am very confused about certain things in my life. Like my overthinking tendencies are nowadays out of control because of a lot of things. बट ऐसे एक दो चीज़ें होती है, बट उसके अलावा आई फील कि सही जा रही है लाइफ. ऐसा कुछ कोई कंप्लेन्स नहीं है. For work updates, weekdays में spending all that 9 hours in front of my laptop and working, calls after calls. ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, but उसके अलावा I'm not like working out, but the one thing that I'm doing every day, I never thought I would love a sport as much as I love playing badminton. I'm not that great at it, और मैंने पहले भी mention किया है, but I'm getting better. You can now see that वो जो smashes जल्दी जो shots आते थे, आजकल मेरे लिए वो slow हो रहे हैं. लाइक पहले मेरे को ऐसा डर सा लग जाता था कि इतना तेज आ रहा है शटलकॉक. 2 साल पहले अगर ये चीज होती तो मैं नहीं कर पाती, मैं ये शॉट नहीं उठा पाती, मैं ऐसे शॉट नहीं मार पाती. एंड नाउ आई एम एबल टू डू इट. there are still a lot of things that I have to work on, but badminton for me is more about fun. I love playing that game. I never want to leave the court, and I would do anything to not miss my raat ka badminton. Weekdays have been work and sham ko badminton. But then also one good thing happened. I got the extra mile award. It's in the individual category of the quarterly Accenture awards. It's called ACE, and it was really I have gotten one employee of the month award before this, but that was normal. उसमें इतना वो नहीं है, but I think this was a little bit bigger of a deal, and I was really happy when I got it. But as time passed, I don't know, the imposter syndrome was kicking so hard. मुझे ऐसा लग रहा था कि I didn't deserve it. There are other people who deserved it more, and even though like Mohak and my friends kept telling me कि Aastha, the way you work, like you do deserve it. That helps जब सब कोई लोग ऐसे बोलते हैं, but then मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि I don't deserve it, I don't deserve it, I don't deserve it. But that's what I've done my whole life. अगर मुझे कुछ भी मेरे साथ अच्छा होता है, I would just think that I didn't deserve it, this just happened. ऐसे कुछ ना कुछ बेकार वो बना के मैं अपने आप को हमेशा पुल डाउन कर देती हूँ. 2-3 weeks के बाद मैंने सोचा आस्था तुझे मिला है. It does not matter. Yes, there are great people in your project, but you got it and you have to own it. तो फिर मैं खुश होके ना अच्छे से फिर उसके बाद थोड़ा मतलब like I've settled with that. But बहुत stressful हो रखा है वो. I do not get to do as much I used to. पहले I could edit along with completing my user stories. Service-based companies में एक time के बाद it doesn't matter who's a better developer, because ठीक है कोई डेवलपर आपसे शायद 5-6 घंटा कम ले लेगा. वी ऑल हैव सो मेनी टूल्स, गूगल है, लाइक AI या कुछ भी किसी भी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगी. बट आई थिंक सर्विस बेस्ड कंपनी में एक टाइम के बाद इट्स मोर अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट द प्रोजेक्ट. एंड वही 2-3 साल होने के बाद यू नो सो मच इन एंड आउट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन माई होल करियर. जब भी मेरा 1 या 2 साल हो जाता है एक प्रोजेक्ट में, इट गेट्स वेरी मच लाइक people are dependent on you, they're calling you more, like they're taking your suggestion. Because पहले मैं fresher भी थी project में अगर मुझे ज़्यादा time हो जाता था, लेकिन अब being a senior software engineer and then getting this much of experience in the same project, stressful काफ़ी हो गया. If you haven't watched the video, please do. Like I can't even talk about it and not smile because it was a very lovely gesture. जो for the longest time लगने लगा था ऐसा कुछ होगा नहीं, but like दिमाग में हमेशा इतनी अच्छी वो थी, images थी कि ऐसा होगा वैसा होगा. But anyway, when I met Mohak, like we were very clear since the beginning that we're dating to get married. Like हमेशा marriage was on the table. Subtly हम लोगों ने बात की थी, ऐसा कुछ serious बात नहीं हुई थी कि proposal होगा फिर हम लोग क्या करेंगे. But last year Mohak introduced me to see them. I think Luka Chippy
was one of the start wala gana. So yeah, I'm not that OG सीधे मौत fan. I didn't know them for a very long time, but जब मुझे last उनके बारे में पता चला, मैंने उनके सारे गाने सुन चुकी हूँ तब से. I used to wake up to सीधे मौत and then sleep सीधे मौत के गानों के साथ, and then even any party, any new friend, कहीं भी कुछ भी gathering है, we would be like सीधे मौत is paying us to advertise them. ऐसा होता था कि मैं और मोहक जैसे भी म्यूजिक कंट्रोल ले ले और पार्टी में सिर्फ सीधे मौत चलाएं, एंड देन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट देम सो प्राउडली, लाइक वो जैसे कि हमने ही उनको बड़ा किया हो, विच इज़ नॉट ट्रू ऑब्वियसली. ने उनकी इतनी सारी वो जो भी टॉक शोज में आते हैं, तो फिर वो जितने भी यूट्यूब में जहाँ भी हमें उनका छोटा सा भी मिल जाता है ना, दैट सीधे मौत आर टॉकिंग अबाउट लाइक देम, देयर लाइफ, बिकॉज वी वांटेड टू नो देम. तो ऐसा काफ़ी हो रहा था, एंड वी रियलाइज दैट दिस इज समथिंग वी बोथ लाइक. आई थिंक December में we went to one of their concerts and we completely loved it. I have never loved a concert as much as that December वाला concert. Obviously Feb वाला ज़्यादा अच्छा लगा. Feel कि rapping live अच्छे से अच्छे rappers से गलतियाँ हो जाती है, but जब मैंने सीधे मौत को December में देखा था, it was so fun. Like कोई track नहीं बज रहा था, they were just rapping माइक में लाइव अपने सारे गाने, which was like something I was really impressed by. कुछ दिनों पहले ही मोहक ने ऐसा बोला था, he would like propose me someday, and I was like yeah cool nice, वो देखेंगे जब होगा. हमने इसकी टिकट I think after December में ही बुक कर दी थी. that first concert देखने के बाद ही हमने बुक कर दी थी. There were so many things that were hinting towards it, but I was just ignoring it. जैसे मोहक first time went and got himself clothes, like उसने प्रॉपर शॉपिंग की और अपना पैसा खर्च किया है उसमें, जो ही नेवर डज. इवन हमारे रास्ते में मोहक गॉट अ कॉल, एंड बिकॉज वो उसकी गाड़ी पे ही बज रहा था, विच वॉज अ लिटिल शेडी, बट उस टाइम पे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बिकॉज आई रियली हैड टू पी, मी एंड माई फ्रेंड हैड टू पी सो बैड पूरे रास्ते. तो एनीवे उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट मुझे ना सटल हिंट्स आ रहे थे. एंड फाइनली जब हम वहाँ पहुँचे, it was so crowded, so hectic कि मेरे दिमाग में जो वो एक thought भी था ना, I was like Aastha, how could you even think कि यहाँ पे कुछ हो सकता है. अचानक से I see him on stage and everyone was so nice. No, there were some people who were pissed. I'm really sorry, I didn't want to take your time. I know you paid for the concert, but even after we put the reel, बहुत लोगों ने सिर्फ अच्छे ही कमेंट डाले, कोई ऐसे बुरे कमेंट नहीं आए, and everyone was so happy, and I'm so glad that like कि सब लोग इतने अच्छे से उसको लिया. एंड इट्स अ ग्रेट स्टोरी. मैं मोहक को हमेशा कंप्लेन करती थी, हमसे पूछेगा तुम कैसे मिले. द स्टोरी इज सो बोरिंग दैट वी स्वाइप्ड ईच अदर, और लाइक वी मेट ऑन हिंज एंड देन वी वेंट आउट ऑन अ डेट, एंड दैट्स इट. लाइक कोई कुछ रोमांटिक कुछ भी नहीं है. एंड he gave me a story, like that was his idea behind it, कि proposal में एक story होगी, which I think is so precious. Like I loved it, and kudos to Mohak for pulling that off. Let's move on to the very serious question. अब हम जहाँ पे भी जाते हैं, जिनसे भी मिल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, we are getting this question a lot. And the funny thing is, मैंने और मोहक ने शायद से प्रपोजल तक की बात की थी कि प्रपोजल होगा. मोहक ने बहुत जल्दी कर दिया, but then we never thought कि इसके बाद शादी भी करनी है और काफ़ी जल्दी करनी होगी, या मतलब कब करनी होगी कुछ नहीं पता था हमें. तो मोहक एंड आई हैव बीन डिसाइडेड, कोई डेट नहीं है. वी ऑल्सो एट द सेम टाइम डोंट वांट टू पुट प्रेशर कि ठीक है ये हो गया, बिकॉज वी वांटेड टू डू दिस प्रपोजल थिंग दैट हैपेंड, बट इसकी वजह से वी डोंट वांट टू रश एनीथिंग. बट रोका होने वाला है एक्चुअली जून में, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एंड करंटली जस्ट आई एम मेकिंग दिस Pinterest बोर्ड जिसमें मैं सिर्फ सोच रही हूँ रोका आउटफिट क्या होना चाहिए. शुड आई गो फॉर साड़ी और जस्ट कीप इट सिंपल इन वेयर और नाइस सूट. इट्स अ वेरी स्मॉल इवेंट. इट्स थोड़े बहुत हमारी मेरी फैमिली से, थोड़े बहुत उसकी फैमिली से, सो इट्स नॉट गोना बी अ बिग थिंग. तो yeah, if you have any suggestions, do leave them down below. Another update, I took IELTS last year October में. Do I plan to study abroad? Maybe is the big जो मैं subtle hints कब से drop कर रही हूँ कुछ होने वाला है. Is it related to this? Might be, but I got 7.5, which isn't a
great score, but 2 हफ्ते में I did it along with my work, so it was fine. There are a lot of videos there कि कैसे एक महीने में you can score 8 and bad. It's easy for people to say that if बचपन से उन्होंने at least English medium school में पढ़ा हुआ है. I would say अगर आप हिंदी medium से हैं तो don't get into those videos जहाँ पे ऐसे बोल रहे 1 हफ्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर या 1 महीने में. That's not how it's gonna be. It's a language, right? You can't master it in a week or like a month. It was a very chill interview भी नहीं, वो जो भी test था, it was very chill. मैं जब वापस आई थी तो मैंने मोहक को बताया था कि I think it went great, like at least the talking part, because she was laughing throughout the conversation. So उस दिन मुझे लगा था कि शायद मैं थोड़ी फनी हूँ. लिसनिंग का थोड़ा डर था बिकॉज मुझे लगा था कि आई वुड नॉट अंडरस्टैंड द एक्सेंट, बट एवरीथिंग वेंट ग्रेट एक्सेप्ट द राइटिंग की वजह से ही पूरा स्कोर नीचे गया है. बट सो या लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, फर्स्ट थिंग जिस पे हमें ध्यान देना ही देना है, दैट आई थिंक इज लिसनिंग. as soon as you register, मैंने IDP के थ्रू किया था, तो you get this login ID जिसमें पूरे ऑडियोज होते हैं that you can play and then solve the question, और अपने आप को पूरा टाइमर बिठा के पूरे अच्छी तरीके से if you prepare बहुत easy रहेगा. बट मैं बोलना चाहूँगी कि राइटिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना. जो प्लान्स के बारे में फिलहाल आई एम नॉट स्विचिंग. आई हैड दिस डिस्कशन विद माई मैनेजर अभी दिसंबर में ही लास्ट ईयर, एंड ही हैड सजेस्टेड, लाइक आई वाज वेरी अपफ्रंट अबाउट इट. आई वांटेड टू टेल हिम कि 2 साल हो गए हैं, टोटल एक्सपीरियंस 7 होने वाला है, तो आई रियली एक्सपेक्ट टू बी प्रमोटेड टू द लीड पोजिशन. एंड उन्होंने काफ़ी सटली बोला था कि आई वुड सजेस्ट यू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज थिंग्स लुक गुड फॉर you. And then उसके 2 महीने के अंदर I also got nominated for the certificate that I was telling you, that extra mile award. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि things are looking good at that front. If I do not get it, then obviously I would try to switch and increase my package. I'm going to give this organization another year. उसके बाद अगर नहीं हुआ तो यार वो switch करना पड़ेगा. I hate giving interviews, and अब तो I know it'll be more difficult with so much years of experience, and it's मैंने इसके बारे में बहुत overthink किया है, but ठीक है, देखेंगे. और कुछ तो है नहीं ऑप्शन. एक ऑप्शन है, एंड हायर स्टडीज़ के बारे में भी मैं सोच रही हूँ. जो यूनिवर्सिटी से मैं करना चाहती हूँ, इट्स जस्ट गोना मेस अप एवरीथिंग, ऑल माई फाइनेंसेस. आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस. मैंने जितने भी जमा सेविंग्स की थी अपनी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, FT, जो भी मैंने ट्राई किया था इतने सालों में की, एंड आई वाज थिंकिंग दैट आई वाज डूइंग गुड. जितना हाथ में पैसा आता है उसको कैसे कहाँ डालना था, मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा मुझे ज़्यादा वो थी, लाइक नॉलेज थी. आई नेवर टुक मनी फ्रॉम एनीवन. लाइक माई फ्रेंड्स वुड बोरो इट फ्रॉम हियर एंड देयर, फ्रॉम मी ऑल्सो, इवन व्हेन मेरी सैलरी कम हो. बट आई नेवर हैड द सिचुएशन वेयर आई हैड टू आस्क फॉर मनी. But now, if I consider about this university that I'm thinking, तो मुझे बहुत बड़ा लोन लेना पड़ेगा, which would, I don't know, which is just killing me. मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है. I'm not like really sure if I should go for it or not. Actually, that is why I've been overthinking so much. There was a time when I thought कि मेरे को student अब कभी भी नहीं बनना है. Now, I'll be honest, I feel like I could use, upskilling, because along with my work I have upskilled. Obviously ऐसा नहीं है कि मैंने upskill नहीं किया अपने 6 साल में, but it's not like how you study during your university days, right? So BTech में मैं बहुत ही chill थी और बहुत ही uninterested और not serious थी about my computer science degree. But after spending so much time in the organization, I know कि I have a better understanding now, and I know how much interested I am, and I will take it seriously, I feel. So, and lastly, we've come to talk about YouTube. I don't say this enough, but I love my YouTube channel, and I don't say it enough because whenever I say it, I feel guilty, because if you love something, how are you not able to give time to it, right? The soft corner I have for my YouTube channel, my little channel that I love, that I built, मुझे just
I don't know, it's precious to me, and I feel so sad that I'm not able to get time to edit and make videos. And काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे, मैं overthink करती हूँ, मुझे लगता है no one would be interested, I shouldn't make videos, and like I compare myself and काफ़ी कुछ, because I know people who started even after me are doing better than me, but I also know कि उन लोगों ने full time कर लिया था, उन्होंने सब छोड़ के किया था, उन्होंने ज़्यादा effort डाले थे, but मैंने भी जितने effort डाले हैं कभी मुझे लगता है कि उतना growth नहीं है, which just makes me sad. And then it's not about the numbers, I keep telling myself, and everyone says that, but somewhere it is about numbers, and somewhere it does affect you. Like now I have over 9,000 subscribers, तो मैं वैसे calculate करके ऐसे सोचती हूँ कि like my channel is not doing well, and that's not fair. Like I didn't start this for that. I'm not talking about YouTube to make another not meant promise that I will start posting more here, because I don't know how that will work out. बहुत ज़्यादा confusion, stress चल रहा है work का, and शादी रोका, like all these things. I feel like काफ़ी बड़ी हो रही हूँ मैं, like these big things, और it's just making me nervous now, because it just makes you feel कि things are changing, you know, the way of growing up. Everything changes, but the feeling that, you know, that you're growing up and that you can't just act like a kid. But I wanted to share how I was feeling about YouTube, and that's mostly love and guilty for not being able to make videos. Yeah, I think that's pretty much it. I hope this video is not too long, and with that I really hope that you guys are doing well, and whatever you're going through, trust me, सबकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं. They just, दूर से जैसा लगता है कि सब सही चल रहा है, बट सबकी लाइफ में बहुत सारी confusion, बहुत सारा stress और बहुत सारी anxiety चल ही रही है, and I think that is life. And thank you for being here, and yeah, let's hope that I post another video really soon. And with that, I'll take your leave. Bye.